I just cannot tell you how happy I feel. आज के ब्लॉग में मैं कुछ बताने वाली हूँ आप लोगों को. लास्ट वाले ब्लॉग में you guys saw me shifting my luggage and everything from Delhi और मैं पहुँच चुकी हूँ माउंटेन्स में. एक्चुअली ये पूरा घर अभी खाली है तो मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा एको कर रही है, इसलिए आई एम ट्राइंग टू जस्ट बी लिटिल सॉफ्ट सो दैट माई नेबर्स दे डोंट गेट स्केयर्ड. मैं पहुंच चुकी हूँ पहाड़ों में. इफ़ यू गाइज हैव बीन फॉलोइंग मी फॉर a long time, you just know how crazy I have been about this dream of mine to be living in the mountains and finally I have made it come true. मैं सेटल होने जा रही हूँ शिमला में. ये वाला जो घर है ये शिमला में होते हुए भी शिमला में नहीं है, एज इन शिमला के आउटस्कर्ट्स में है, नॉट एग्जैक्टली लाइक क्राउडेड वाला शिमला. तो यहाँ पे मुझे वो गांव जैसी फील, फ्रेश एयर, माउंटेन्स का व्यू, गॉर्जियस व्यू फ्रॉम अ बैल्कनी, ये सब कुछ मिलने वाला है. एंड एट द सेम टाइम आई एम इन द सिटी, एज इन मैं चाहती नहीं थी कि बिल्कुल से आइसोलेटेड कोई विलेज में जाती रहूँ, क्योंकि आई स्टिल हैव टू ट्रैवल, हैव टू टेक माई फ्लाइट एंड सो मैनी थिंग्स. तो आई वॉन्टेड टू बी इन द सिटी जो कि वेल कनेक्टेड हो. सो शिमला फेल्ट लाइक द बेस्ट ऑप्शन. तो ये है मेरा घर जो कि फ़िलहाल बिल्कुल खाली है. So it's like a semi-furnished apartment that I have rented. I do have the wardrobe here. Wardrobes are also very spacious. So considering the amount of clothes and shoes I have, I can utilize this whole space. Here is the view. यहाँ पे मुझे 3 sides से view मिलने वाला है. And I have never done an empty house tour video, तो पता नहीं, मैं फिलहाल मेरी एक्साइटमेंट लेवल इतनी ज़्यादा है कि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ. This side I have a bathroom. खोल के दिखाई देती हूँ. So this is one bathroom. This is the main entrance. And here I have a gorgeous view. I'll show you guys in a bit. This is my living area and this is my dining area. Here I have a cabinet if I want to use it as a bar cabinet. Then my kitchen. ये मिरर अभी बाथरूम में लगना है. किचन से भी व्यू मिलता है. एंड देन इट्स अ प्रॉपर मॉड्यूलर किचन. यहाँ पे आई प्लेस माई फ्रिज. यू नो व्हाट, इस घर में आने के लिए मेरे पास बहुत सारी वजह है लाइक खुश होने की. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ लाइक अ कॉर्नर की बिल्डिंग. 3 डायरेक्शन से आई कैन गेट द व्यू. ये मेरे रूम से. देन द किचन, बहुत ही सुंदर व्यू है. एंड दिस साइड इज द लिविंग एरिया. थोड़ी देर में बैल्कनी चलते हैं और इस वाली जगह से भी आई कैन गेट ब्यूटीफुल व्यू. सनराइज और सनसेट का पता नहीं है क्योंकि मैं जब ये घर देखने आई थी आई केम इन द आफ्टरनून टाइम. बाकी हियर इज द माई मोस्ट फेवरेट पार्ट. चेक दिस आउट. This is the view from my balcony. This is me, excited. This is the bathroom and I do have a view from the bathroom also. And here is Aru. Aru, are you excited? Oh Aru, हम नए घर में आए हैं. Are you happy? She's so curious. She's so curious. Love you. I genuinely cannot tell you guys how happy I feel. मैं शिमला आई थी अभी से 2 weeks पहले जब हिमाचल का लॉकडाउन ख़त्म हुआ था ये घर देखने के लिए. ये घर नहीं, इसके साथ मैंने बहुत सारे घर देखे. I was here for 1 week and I saw more than I guess 20-25 houses. But this one felt exactly like the house I wanted. I tell you guys, I am God's favorite child. तो ये घर बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था कि अगर मैं पहाड़ों में कभी रहूँगी तो I should get gorgeous view
from my balcony and it should be spacious. तो ये सब कुछ यहाँ पे है। मैं हर सेक्शन को अभी डेकोरेट करूँगी, इंटीरियर करूँगी सबका, तो आई शो यू गाइज व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग। एंड क्योंकि ये चारों तरफ लाइक आई हैव एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा इस घर में, एम्प्टी वॉल्स, सो आई हैव प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू डू. So even if like in future lockdown happens again and I'm not able to travel, I will still be in the mountains, and that thought itself is keeping me so happy. Now onwards, this is going to be the happy place of DesiGirl Traveller. Yeah, I'm super excited. I hope you guys feel happy about me. Wish me all the very best because यहाँ से मैं अपने बहुत सारे projects जो मैंने सोचे हैं अपने future के लिए I'm going to work towards it. और उसके लिए मेरा माउंटेन्स में कहीं पे आके रहना बहुत ज़रूरी था, तो बस and since last 1 week I was literally very caught up with all the packing, shifting, blah blah blah. मेरी हालत बिल्कुल नहीं है बहुत ज़्यादा बात करने की। और अभी बज रहे हैं शाम के कुछ 5 and my truck जो कि दिल्ली से चला है, it will reach here by 7:30 and then I will have so many things to do. बहुत कुछ करना है इस घर में, बहुत अच्छे से इसको मेरा ड्रीम वर्ल्ड बनाना है। चलो then I'll see you guys in the next vlog. Wish me luck, take care, all the best to you all.